Hello students, here I am Gandhi Kumar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. So here I am back with an online lecture series on income tax subject. So let's start this lecture. Today we are going to cover some more provisions from income from capital gains. We have already discussed some provisions from income from capital gain. Now we are going to cover some more provisions from this head. So let's move on. Let's start with lecture. Yes. So see, today's topic is today's provision. First provision is yes, capital gain in case of transfer of shares of the debentures by non-resident. If any capital gain arising through the transfer of shares and debenture by a non-resident, then what will be the tax treatment of that? Let's see. If a non-resident acquires shares in or debentures of an Indian company by utilizing foreign currency, the gain will be calculated in the same foreign currency which was initially utilized in the acquiring shares or debentures. After calculating capital gain in foreign currency, it will be converted into Indian currency. So see, if any non-resident acquires any shares in an Indian company or any debentures of an Indian company by utilizing the foreign currency, then in that case, then capital gain will be calculated in the same currency in which the shares and debentures are acquired. Then after calculation of capital gain, we will convert this capital gain in Indian currency when capital gain arises. Okay? After calculating capital gain in foreign currency, it will be converted into Indian currency. Okay? So see what will be the tax treatment. The benefit of indexation is not available even if the asset is long term. So if there is a case when any non-resident purchase or acquires the shares or debentures in Indian company, then in that case no indexation benefit will be allowed even if the assets is long term or gain is long term capital. So no indexation is available in the case where any non-resident acquires the shares and debentures of Indian company. Okay. Now see how will we calculate the capital gain. So capital gain will now be calculated as under full value of consideration converted into foreign currency at average PP buying and PP selling rate on date of sales. We will less the expenses on transfer which a non-resident spend on transfer or such transfer. Then we will less the expenses on transfer and will convert these expenses into foreign currency at average PP buying and PP selling rate and on the date of sale. And we will less the cost of acquisition, and cost of acquisition is also being converted into foreign currency at average PP buying and PP selling rate on the date of acquisition. The resultant amount will be capital gain in foreign currency. Now, after calculating the capital gain in foreign currency, we will convert this capital gain in Indian currency. So first thing, that is what is the meaning by PP buying rate or PP selling rate? What is PP buying and PP selling rate? See, PP is telegraphic transfer buying or selling rate in the relation to a foreign currency is the rate of exchange adopted by the State Bank of India for purchasing or selling such currency, where such currency is made available by that bank through telegraphic transfer. So basically, telegraphic transfer buying or selling rate is a rate on which State Bank of India, which is determined by the State Bank of India, on which State Bank of India use for purchasing and selling in such currency. So telegraphic transfer buying or selling rate is the rate which is used by the State Bank of India for purchasing and selling in that currency. Okay. Yes. Now, next provision is exemption of LTC, exemption of long-term capital gain to non-resident Indian on transfer of foreign exchange assets. If any non-resident Indian transfer any capital assets, long-term capital assets, and gain some capital gain and gain some earning or gain some profit, then in that case some exemption will be allowed to that person. If any non-resident Indian transfer any assets and gain some income from
debt transfer, then there is some exemption is allowed to that person. So what will be the exemption? So the LTCG arising on sale of above any long-term forex assets, shares, debentures of Indian company and CZ securities, NSE, etc., shall be exempt if the net consideration sale proceed less cost of transfer. Net consideration is utilizing for the acquiring other forex assets within 6 months from the date of transfer. So see, when any non-resident, जब कोई non-resident अपनी किसी फॉरेक्स एसेट्स को बेचकर, फॉरेक्स एसेट्स मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, सीजी सिक्योरिटीज और एनएससी, इनमें से कोई भी अपने एसेट्स को बेचकर कोई गेन अर्न करता है और उस गेन को या कंसिडरेशन को, जो इनको बेची जो भी कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन उस नॉन रेजिडेंट के पास आता है, उस कंसिडरेशन को फिर से उसी टाइप की एक फॉरेक्स एसेट यूज लेने, फॉरेक्स एसेट को परचेज करने के लिए यूज लेता है उस नेट सेल्स कंसिडरेशन वाले अमाउंट को विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन इनकम टैक्स के अंडर उसको मिलेगी। तो बेसिकली जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कोई फॉरेक्स एसेट्स को ट्रांसफर करता है या सेल करता है, उसको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव करता है उस अमाउंट का यूज दूसरी कोई फॉरेक्स एसेट यूज लेने के लिए करता है विद इन द 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, then in that case exemption will be provided to that person. So what will be the quantum of exemption? So quantum of exemption will be LTCG. First we will write LTCG, then we will multiply the amount invested upon net consideration. So exemption ratio will be, exemption amount will be LTCG multiplied by amount invested upon net consideration. Resultant amount will be exemption amount, and exemption will be provided to that person or that non-resident area. Okay. Yes. Now see, there is a note. Exemption granted under section 115S. Under section 115S, if you give some exemption, exemption granted under section 115 shall be withdrawn if such asset is transferred or converted into money within 3 years from the date of its acquisition. So this exemption will be withdrawn if such assets is transferred or converted within the 3 years of date of acquisition. तो ये एसेट्स जब आपने परचेज करी है, उसके अगर विद इन 3 इयर्स आप उस एसेट्स को वापस बेच देते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करवा देते हैं, मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इन दैट केस ये एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी और एग्जेम्पशन का जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द एग्जेम्पशन ऑफ एलटीसीजी टू नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, yes, now let's move on next provision, that is exemption of LTCG arising from sale of shares in units. So if a person sell any shares and units, other securities or other units, then there will be an exemption of LTCG. So what will be the exemption of LTCG? See, LTCG from equity share or unit of any oriented mutual funds is exempted provided the shares and units are sold to recognized stock exchange or unit are sold to mutual fund and STT is fixed. STT means the full form of STT is security transaction tax. See, if you sell any equity or any other unit of mutual fund, if you transfer that asset and earn some capital gain, long-term capital gain, then this long-term capital gain will not be taxable and will be fully exempt if you sell these shares and units, you sold these shares and units to the recognized stock exchange, or STT is paid on that. STT means security transaction tax is paid on these securities. Then in that case, the LTCG will be exempt from tax. That means no LTCG will be taxable. Okay. So अगर आप कोई shares या units बेचते हैं थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे कर दिया है, तो उस केस में अगर आपको कोई एलटीसीजी होता है, उसके सिक्योरिटीज को बेचने पे कोई गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी exempted from tax and no tax will be charged on that LTCG. Okay. Yes. Now let's move on. Next provision is tax on STCG arising from sale of shares and units. Section 111A. STCG from equity shares or units of equity-oriented mutual funds shall be taxable at the rate 15% if the shares and units are sold through recognized stock exchange or units are
sold to mutual funds and STT is paid. When you arise any short-term capital gain. Previously, we talked about long-term capital gain. Now we are talking about STCG. So, if you earn some STCG, short-term capital gain, by transfer of equity shares or any other units of mutual fund, then this income, this STCG will be taxable at the rate 15% if these shares are sold through the recognized stock exchange or STT is paid on that. Okay, so in this condition, if the gain is your long-term gain, then no tax will be charged, and for this LTCG will fully exempt. But if you earn some STCG, short-term capital gain, then this short-term capital gain will be taxable at the rate 15%. Okay. Yes. Yes. Now see, an equity-oriented mutual fund means a fund where more than 65% of total proceeds of the funds are invested in equity shares of domestic companies. So here a term is used that is equity-oriented mutual fund. So what do you understand by equity-oriented mutual fund? So basically, an equity-oriented mutual fund is a fund where more than 65% of total proceeds funds are invested in the equity shares of the domestic company. Okay. Yes. Now, there is some exemption, that is exemption of LTCG under section 54. There is some exemption of LTCG, long-term capital gain, under section 54. So this point is, this topic is little important from exam point of view. So let's see. Exemption means the amount on which no tax will be charged. Exemption का मतलब होता है ऐसा amount LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा उसको हम बोलते हैं exemption. Exemption is basically the amount on which tax is not levied. Okay? So see, LTCG को कहाँ exemption मिलती है under section 54. So first section है section 54. Now there is various columns you can see. First column is section that is 54. We are talking about the section 54. Who can claim these exemptions? So exemption under section 54 will be allowed to any individual or HUF. Okay? So if you are any individual or HUF, then only section 54 exemption will be provided to you. So this section is applicable on individual or HUF. Next column is assets to be sold. A residential house property, minimum holding period 3 years. Assets to be acquired. Next column is assets to be acquired. Residential house property. Time limit of acquired. The new assets is, and next column is exemption amount, and last LTCG or STCG eligible. तो पहले मैं आपको कॉलम्स का मीनिंग समझाती हूँ. फर्स्ट कॉलम है आपका सेक्शन. इसमें हम लिखेंगे सेक्शन के नंबर. कौन कौन सा सेक्शन है? लाइक सेक्शन 54, 54, 54B, C and so on. Who can claim exemption? Second column is who can claim exemption. कौन कौन ये exemption का claim कर सकता है, मतलब ये exemption किस किस के ऊपर applicable होगी, वो हम लिखेंगे second column में. Then किस assets के बेचने पे आपको ये exemption मिलेगी. Next, अगर जो आपने assets बेची है उसके बदले में कौन सी assets आप purchase करेंगे, सिर्फ उसी condition में आपको exemption मिलेगी. Then आपका जो आपने assets बेची है उसका holding period क्या होना चाहिए, time limit of acquired the new assets क्या होनी चाहिए, सॉरी न्यू एसेट जो आप एक्वायर कर रहे हो इस थर्ड कॉलम में, जो भी एसेट्स आप एक्वायर कर रहे हो, कितने दिन में, विद इन हाउ मेनी डेज यू हैव टू परचेज दैट एसेट, न्यू एसेट्स. ओके, तो वो टाइम लिमिट आएगी इसमें. देन एग्जेम्पशन अमाउंट. एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन विल बी फॉल इन दिस कॉलम. एंड एलटीसीजी या एसटीसीजी एलिजिबल. एलटीसीजी ही एग्जेम्प्ट होगा या एलटीसीजी एसटीसीजी दोनों एग्जेम्प्ट होंगे या दोनों ही एग्जेम्प्ट. ओके, so first section is section 54. Section 54 is applicable on individual or HUF. अब section 54 क्या कहता है कि अगर if a resident house property minimum holding period is 3 years. If any resident house property which minimum holding period is 3 years is sold. अगर कोई resident house property अगर आप बेचते हैं और उसके बदले में उसके एक्सचेंज में आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज कर लेते हैं, कितने टाइम में, परचेज विद इन 2 years और 1 year back of if construction be completed within 3 years from transfer. तो कि अगर आप कोई अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड
ईयर से आपके पास जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको बेच के आप कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं कितने दिन में? बेचने के विद इन 2 ईयर्स या बेचने के 1 साल पहले ही आपने खरीद के रखी है। और अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर। तो आपने जब ये पहले वाली अपनी पुरानी वाली हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है उसके 3 ईयर्स में आपका क्या हो जाना चाहिए? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स और कैपिटल इन व्हिच एवर इज न्यू। तो यू विल सी द इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स मतलब आपने न्यू एसेट्स मतलब न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन कितना हुआ आपको पुरानी वाली एसेट्स को बेच के, पुराने वाले हाउस प्रॉपर्टी को बेच के कितने का कैपिटल गेन हुआ। इसमें से जो कम होगा विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इस कंडीशन में सिर्फ एलपीसीजी में ही एग्जेम्पशन मिलेगी। इफ देयर इज एनी एसटीसीजी नो एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। Yes. Now let's move on next section, that is section 54. This section is applicable on individual or HUF if you sold any agricultural land which is used by SSC himself or by his parents for agriculture purpose during last 2 years of transfer, and you purchase another agricultural land in lieu of that land in urban or rural area, and you have to purchase that another new agricultural land within the 2 years forward. So exemption limit will be investment in the agricultural land to capital gain whichever is lower, and which capital gain will be taxable, STCG and LPCG both will be taxable. So if अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो आपने या आपके पेरेंट्स ने ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स यूज करा है, कम से कम 2 ईयर्स तक आपने या आपके पेरेंट्स ने कोई एग्रीकल्चरल लैंड यूज किया है और अब आप उसको बेच रहे हो और उसको बेचने के बाद कोई अदर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर रहे हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में हो, और ये परचेज कितने दिन में होना चाहिए? जब आपने पुरानी एसेट्स बेची, पुरानी एग्रीकल्चरल लैंड बेची उसके 2 ईयर्स के अंदर 2 ईयर्स के अंदर अगर आप इसका न्यू एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी? क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन मिलेगी जो इन्वेस्टमेंट आपने नई एग्रीकल्चर लैंड में किया है और जो सेल प्रोसीड आपने पुरानी एग्रीकल्चर लैंड को बेच के किया, तो कैपिटल सेल प्रोसीड इट इज कैपिटल। तो जो नई एसेट्स में आपने नई एग्रीकल्चर लैंड में जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो और पुरानी एग्रीकल्चरल लैंड में से जो कैपिटल गेन आपको हुआ है विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। और कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोथ विल बी एग्जेम्प्टेड। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, एग्जेम्पशन आपको दोनों केस में ही मिलेगी। जबकि पहले वाले सेक्शन में क्या था, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड हुई। यस, नाउ next section is section 50 EC. Okay? Next section is section 54. Sorry, 54 EC. This section EC is applicable on any person. This is not mandatory that this will be applicable on individual or HF. This will applicable on every person, any person. Okay, it may be AOP, any BOI, any person, any individual, any actual, or many more persons. We have already discussed the definition of persons and which kind of persons we include. So there may be any kind of person. This section will applicable any kind of person. If you sold any long-term capital assets, जिसकी minimum holding period है 3 years. So if you sold any long-term capital assets and purchase in lieu of that long-term capital asset bond of NHAI or RP within the 6 months from the transfer. So if any person sold any long-term capital assets which minimum holding period is 3 years and purchased bonds of NHAI or REC on the place of any long-term capital assets within the 6 months from transfer, within the 6 months of any long-term capital assets which you sold on the date of sales, within the 6 months if you purchase any bonds of NHI or REC, then this exemption will be provided. Then exemption under section 54 EC is provided to you. So what will be the quantum of exemption? So quantum of exemption will be investment in new assets or capital gain whichever is less. Maximum limit rupees 50 but the exemption limit, maximum exemption limit will be 50 lakhs. So
invest in new assets. Amount that is invested in gains of NHAI or REC and any capital gain received by sale of any long-term capital asset. Whichever is less will be exempt, but the maximum exemption limit will be 50 lakhs. Or if there is LTCG, long-term capital gain, only that condition you are allowed for exemption. Okay. Yes. Now next is section 54F. So this section is applicable on individual and HUF. Any individual or HUF. This section is applicable on individual and HUF only. If any individual or HUF sell any long-term assets other than the residential house, and in lieu of that, if you purchase any residential house property on place of that long-term asset which you sold, on the place of that asset, if you purchase any residential house property, and this house property must be purchased in 1 year back or 2 years forward. In case of construction, 3 years forward. Investment in new asset and sales consideration. So what will be the quantum of exemption? Investment in new assets upon sales consideration multiplied by capital gain. So this will be the resultant amount will be the exemption limit, and this exemption is provided only in the case of LTCG. When there is long-term capital gain, only in that case this exemption will be provided. So see this section 54F, exemption of 54F. The exemption of 54F is provided to only individual or HUF if any long-term assets other than the residential house property sold by any individual or HUF, and that individual and HUF purchase any residential house property on place of that residential house, that long-term assets, on the place of that long-term assets. If a person or individual or HUF purchase any residential house property within the 2 years forward or 1 year back, या तो आपने 1 साल पहले ये जब सेल किया उससे 1 साल पहले ही कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, या 2 साल विदिन 2 years. और कंस्ट्रक्शन के केस में इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी हाउस प्रॉपर्टी, आप सीधा परचेज नहीं कर रहे हैं, रेडी टू मूव परचेज नहीं कर रहे हैं, इवन कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, देन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 years forward. 3 years में आपका जब आपने बेची है ये लॉन्ग टर्म एसेट, उसके 3 years में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है. Then in that case the exemption will be provided, and what will be the quantum of exemption? So you have to calculate the quantum of exemption with the help of a formula. So what will be the formula? Investment in new assets upon sales consideration multiplied by capital. Or in the case of LTCG, this exemption is only provided. In the case of HTCG, no exemption is provided under section 54F. Okay. Yes. Now let's move on with another exemption, that is 54G. Next exemption is under section 54G. If any person, this section is applicable on any kind of person. Okay? It may be AOP, it may be any BOI, any HUF, any individual, or so on. So if any person sold any plant and machinery, building, or any other assets in urban area, and on the place of that, if that person purchased plant and machinery, building, or any other assets in the other rural area, that person sell his plant and machinery, building, or any other assets in urban area and purchase plant and machinery, building, and other assets in rural area. Then in that case, if that person purchased within 1 year or before 1 year before or 3 years after. So this purchase must be 1 year before of that sale of that plant, machine, building, or any other assets, or after the 3 years of such sale. Then in that case, what will be the quantum of exemption? The quantum of exemption will be amount invested in new assets or capital gain, whichever is there. Or this section is applicable on HTCG and LTCG. So अगर कोई person urban area में situated any plant, machinery, building, or any other assets अगर बेच देता है, उसके बदले में रूरल एरिया में कोई प्लांट, मशीन, बिल्डिंग परचेज कर लेता है, कब? within the 3 years of sale. ये जब आपने सेल करी है इसके 3 years में, या जो ये सेल हुई है उसके 1 साल पहले ही आपने परचेज करके रखी है रूरल एरिया में, तो what will be the quantum of deduction? To quantum of exemption will be
अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, तो इस रूरल एरिया में जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और इस अर्बन एरिया में बेच के जो आपने कैपिटल गेन अर्न किया है, उन दोनों में से जो लेस होगा वो क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा। और ये सेक्शन एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों पे एप्लीकेबल होगा। वेदर देयर इज एसटीसीजी देन आल्सो exemption is provided, whether there is any LTCG then also this exemption will be provided. Okay, now last but not least section is section G, exemption of section G. If this section is applicable on any person, there may be an individual, any HUF or any other person, or this section is applicable on all kinds of persons. So if any person sale any plant and machinery, land, building in urban area and purchase any plant, machinery, land, building and stays on the place of that area, that asset, on the place of that asset, and this purchase is made within the 1 year within 1 year before or 3 years after the transfer, what will be the quantum of deduction? What will be the quantum of exemption? Amount invested in new assets or capital gain, whichever is less, and this also apply on SPCG and LPCG. So सेक्शन जी ए की एग्जेम्पशन किन लोगों को मिलेगी? सेक्शन जी ए की एग्जेम्पशन किसी भी टाइप के पर्सन को मिलेगी, चाहे से वो इंडिविजुअल हो, चाहे से एचयूएफ हो, चाहे से एओपी हो, चाहे से पीओआई हो, कुछ कोई भी पर्सन हो, सबको मिलेगी। अगर कोई पर्सन अपने प्लांट मशीनरी जो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है उसको बेच के उसकी जगह पे कोई प्लांट एंड मशीनरी सेज में ले लेता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर परचेज कर लेता है, और वो परचेज कितने दिन में होनी चाहिए? या तो आपने जब ये बेचा इससे 1 साल पहले ही आपने परचेज करके रख लिया, या जब ये एसेट्स आपने बेची है अर्बन एरिया वाली इसके बाद 3 इयर्स के अंदर अंदर आपने अगर वो परचेज कर दी है तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आपने सपोज 3 इयर्स में आप परचेज नहीं किया, 4th ईयर हो गया, 4th ईयर में परचेज किया, तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर 3 इयर्स के अंदर अंदर आपने एग्जेम्पशन कर लिया इसको सेल करने के बाद, अर्बन एरिया वाली एसेट्स को सेल करने के बाद विदिन 3 इयर्स आपने परचेज कर लिया, तो ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, तो आपने सेल्स में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, या फिर इस एसेट्स को अर्बन एरिया वाले एसेट्स को बेच के जो कैपिटल गेन अर्न किया है उनमें से जो लेस होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड एग्जेम्पशन किससे मिलेगा? एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। If there is STCG, then also this exemption is provided. If there is LTCG, then also this exemption is provided. Okay, so these are your all exemptions, and this is all about your capital gain. So here we completed our capital gain chapter. Okay, so in next lecture we will talk about the 5th and last head of the income, that is income from other sources. Okay, so that's it for today. Thank you guys.